Good evening, brothers and sisters. I'm so excited to start with you this next lesson 5 for coaching. We are working especially with leaders for children's ministry, but also teachers are welcome. हम लोग चाहते हैं कि भाई और बहनों, हम बहुत खुश हैं कि आज हमारा 5वां क्लास है और हम लोग मिलकर इसको शुरू करेंगे। और हम ये नहीं, हम तो लीडर्स बनाने की जो है अगुवे बनाने की कोचिंग देते हैं, पर उसके साथ हमारे टीचर्स शिक्षकगण भी हमारे साथ हैं, तो हमें बहुत खुशी है। Yeah, so it's a blessing to be with you today, and I'm going to go ahead and share my screen so we can start the presentation. और बहुत खुशी है मुझे आप सबसे मिलते हुए, और मैं बहुत जल्दी ही अपना जो स्क्रीन ऑन कर रही हूँ ताकि हम आज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें चलें। Welcome to lesson 5. आप सबका पाठ 5 में स्वागत है। So for Champions Children's Ministry, we are doing an assignment for the students every week. What assignment did you give this week? So Champions में हर हफ्ते आपको पता है कि हम लोग एक अमलीकरण, एक असाइनमेंट, एक होमवर्क हम देते हैं, और इस हफ्ते मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कौन सा असाइनमेंट अपने स्टूडेंट्स को दिया। So everyone's on different classes. I know Johnny Brothers on like lesson 10 now this week. And I think also some were able to start with Zoom, and others, the church was closed, so they're just now starting. I think some are also on lesson 1 or 2. Is that correct, Sister Bessie? Yes, Shilpa sister is on lesson 1, और Shilpa sister lesson 1 में है, and Mary sister is on lesson 2. Like that, many are on different lessons. That's great. So you need to just give the assignment for the week you're on. Yes. तो आप लोगों को अपना जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें जो असाइनमेंट है, उसमें जो अमलीकरण है, वो आपको देनी है। So here's the example. It's called In the Ring. It's a little box in red in your teacher's book and also in the student's book, and that gives you the assignment. और इधर आप सामने देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स के अंदर है वो है जो आपका अमलीकरण है, रिंग के अंदर जो लिखा हुआ है वो स्टूडेंट्स बुक में भी है, टीचर्स बुक में भी है। So one of the hardest is just to do something for love someone else, so doing something that someone else wants that you don't want to do. हाँ, जब कई बार बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी से प्यार करने जाते हैं या वो आपसे प्यार करते हैं, पर कई बार ये बन नहीं पाता। Fantastic. Okay, so we also last week worked on rules, and we had these different posters. So we also worked on writing rules for your class. हमने पिछले हफ्ते जो हमारा अमलीकरण था जो टीचर्स के लिए, शिक्षकगण के लिए था, वो ये था कि ये जो नियम है वो आप लोग या तो खुद से लिखे या जो हमने नियम दिए उसको निकाल के आप पोस्टर अपने संडे स्कूल में लगाएं। So we asked you to choose your class rules and make a poster or print these and then take a picture and put it up on Google Classroom. हमने आपसे कहा था कि अपनी कक्षा के नियम चुने, अपनी कक्षा में नियमों को दर्शाने के लिए एक पोस्टर या चिन्ह बनाएं, कक्षा में जमा करने के लिए अपने नियमों की एक तस्वीर ले, अपने विद्यार्थियों को एक नया अमलीकरण दे। So I want to congratulate brothers Johnny and Sandeep. You did fantastic, and your pictures are up on Classroom. और मैं मुबारकबाद कहना चाहती हूँ ब्रदर जॉनी के लिए और ब्रदर संदीप के लिए, क्योंकि उन लोगों ने गूगल क्लासरूम में इन फोटो को अपलोड कर दिया है। Woo! Also, yes. I saw lots of people are up on Classroom. Also, Sister Swarta, Sister Shilpa. So, and Sister Poonam, you are also up there. So that's fantastic.
या और मैंने और भी बहुत लोगों को देखा जो जैसे कि हमारी सुवार्ता सिस्टर है, शिल्पा सिस्टर है, पूनम सिस्टर, इन सब ने भी किया है। आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। So also Brother George is happy to help upload your photos there. So if you put your photos in our WhatsApp group and you're already registered in Classroom, Brother George can put them up for you. और अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है कि गूगल क्लासरूम में डालने के लिए, तो आप जैसे व्हाट्सएप में भी डाल देते हो, तो ब्रदर जॉर्ज जो है मैक्सिको ऑफिस से, वो आपको जरूर आपके इन फोटो को उसमें डाल के मदद करेंगे। So we had in our Spanish class this fantastic idea last week with ribbons. पिछले हफ्ते हमारे स्पेनिश क्लास में हमें बहुत ही अच्छा कुछ नया आइडिया के साथ हमें कुछ मिला जो रिबन्स के द्वारा बनाया गया है। So the idea here is that you cut the ribbon of the child who is disobedient. You cut a little bit off the bottom. ये आइडिया हमें एक मिला कि जैसे कुछ बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं, उनके लिए ये जो रिबन है नीचे से थोड़ा थोड़ा काटना है। Okay, so last week we talked about after you have the rules, you have to also discipline. So you have to say, okay, if you disobey, what's going to happen? You have to have like discipline that comes when they don't obey. हाँ, और पिछले कक्षा में जैसे हमने नियम बनाए थे, अब आपको पता है कि जब नियम बन जाते हैं तो उन नियमों को आगे उसको बनाए रखने के लिए हमें कुछ डिसिप्लिन भी लाना पड़ता है। So I shared with you, you can warn them, you know, touch them on the shoulder and say, oh, remember, be quiet. और जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि एक तरीका है कि आप उनके कंधों पे हाथ रख के बोलते ओ आप बिल्कुल शरारत मत करिए। But then we had right from that the warning right to the timeout chair. The second one was straight to the timeout chair. यस और हमने दूसरी एक चीज सीखी, वो है कि टाइम आउट चेयर, मतलब जो पीछे चेयर को अलग रख के जो हम अपने कक्षा में वैसा भी एक बना सकते हैं। So this idea someone shared in the other coaching class, and I think it's much better than the timeout chair. या आप अपने कक्षा में अलग सा कुर्सी रख के अगर बच्चे को अलग करेंगे, उससे भी मुझे ये जो हमारे स्पेनिश ग्रुप में किसी ने ये नया आइडिया दिया, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। So you put a name of the child on each ribbon or piece of paper. आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों का जो नाम है उसको जो रिबन है, इन रिबन में या एक पेपर में क्या है उनका नाम लिख के रख सकते हैं। So when one child is like, if you have on there, I see one named Sister Fatima, you write that child's name, and then when that child disobeys, you cut a little bit of that ribbon. ओके तो ये क्या है, जैसे आपने देखा इन एक रिबन्स में एक बच्चे का जैसे उनने बताया फातिमा नाम, अगर उस बच्चे का नाम किसी का नाम ऐसे हम लिख के रख देंगे, अगर वो बच्चा बहुत शरारती कर रहा है तो आपको क्या करना है, नीचे से थोड़ा सा उसको कट करना है, काट देना है। And they're not going to want you to cut the ribbon or their paper strip. या तो आपको क्या करना है कि अगर आपने रिबन में किया है तो रिबन को कट करना है, नहीं तो अगर पेपर का स्ट्रिप बनाया है, पतले पतले ऐसे पट्टियां बना रखे हैं, तो आपको उसको काटना है। So you can see one of them, she did on each card, they wrote their name and then she attached a strip of paper. और आप से देख सकते हैं कि उनने क्या किया, उस टीचर ने सब बच्चों के नाम ऐसे स्ट्रिप में लिख के रख दिए और उसके बाद जो बच्चा शरारती कर रहा है उसका नीचे से काट रहे हैं। Okay, so I want to ask you guys how it went for you. How was your were you able to discuss rules with the students? How did it go for you this week? मैं अब ये समय है जब आप लोगों से चाहती हूँ सुनना कि क्या आपने अपने कक्षा के नियम बनाए, और आपने जब नियम बनाए तो वो कैसा रहा, आपके बच्चों के साथ का वो जो एक्सपीरियंस है आप उसको हमारे साथ शेयर करिए। अभी एक जन बता सकते हैं।
Anyone willing to share? Yes, जो आप में से बोलना चाहते हैं जल्दी से बताइए ताकि हम समय पे आगे बढ़ते भी रहें. ओके एक मिनट, एक तो सूचना, ये रोशनी जो है इनका माइक की जरा ओपन है, इसको जरा म्यूट कर दें. रोशनी है. It's Okay. okay. हाँ तो बोलिए ब्रदर. यस यस हमारा जो था क्लासरूम जो था हमारा बहुत अच्छा था. एक कक्षा के नियमों के द्वारा हमने जो है बच्चों को काफी बच्चे से सीखे और काफी इंटरेस्टेड हुए थे ये चित्र देख के. तो बच्चों को काफी मजा आया और बच्चों को बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने हमसे पूछा कि इसका मतलब क्या है. तो हमने उनको अपने शब्दों में बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया. तो हमारा जो अनुभव था इन नियमों के द्वारा वो काफी बेहतर रहा और बच्चों को हमने संक्षेप में बच्चों को सिखाया कि देखने वाली आंखें हैं, सुनने वाली जो कान है, शांत रहने वाला मुंह, मदद करने वाला चलने वाले पैर, इनको जो है अपने शब्दों में इनको बाइबल से आधारित हमने समझाया था. तो इस तरीके से हमारा Okay, sis Blessing, tell me what he said. Yeah, he was saying like he took the printout. He has shared the pictures with us. He put it in his classes. Mhm. So, but children were very excited because it was a new thing that they were seeing in their classes. So, but they cooperated. है ना जॉनी ब्रदर, उन सब ने आपके साथ कॉपरेट किया ना? कैसा रहा? उनको कैसा मतलब वो जब उनने पहली बार ऐसा कुछ नियम देखे, क्लास में रूल्स देखे, तो उनको कैसा लगा? क्या बच्चे शरारत कर रहे थे, काबू में नहीं आ रहे थे, या कैसा था? पिछले लास्ट क्लासेस से कैसा था ये कंपैरेटिवली? नहीं, लास्ट क्लास से भी नहीं, बल्कि अभी तक हमने अपने 9 साल में जो संडे स्कूल लगाए उससे भी बेहतर रहा ये. क्योंकि पहला बार ऐसा था कि हम सिस्टमेटिक तरीके से इस तरीके से लगाएं जो कि बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे ये हमारे कक्षा के नियम. Oh, what happened? What happened? Sister, yeah, I'm also excited. He said, I said, like, how was the experience from your previous class? But he said, no, not the previous class. From the 9 years experience, he felt it was totally a different, where students were more attractive to the, class, because they were seeing something new in their walls. And they were like, and they were cooperating, and he was able to share the detail, Wow. Yes, why they have put this and all those rules. Wow, that's fantastic, brother. Woo! From 9 years. Yes. Yeah. Yes. Well, I think, brother Johnny, too, if you can do the ribbon or the paper, you'll find they don't want you to cut the paper. They will be very good. ब्रदर, अगली बार से आप ये वाला भी कर सकते हैं, जो रिबन वाला या पेपर का ऐसे स्ट्रिप करके, ताकि धीरे से नीचे से काटेंगे वगैरह तो उनको अच्छा लगेगा और अच्छी तरह वो रहेंगे. बिल्कुल, एक बार और ग्रुप में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझा दीजिएगा कि अभी थोड़ा सा स्पष्ट समझ में आएगा. Okay. Sister Christy, he is saying like this ribbon portion, if you can put it in the as a video in the group, it will be very helpful for him to understand, because it's not so clear at present. Okay. Let me show you. Let me make it more clear. Yeah. Okay. So you can do a strip of paper like this. And this is for one child. आप इस तरीके से काट सकते हैं और एक स्ट्रिप, एक पेपर एक बच्चे का होगा. So you're going to write this child's name. Can you tell me, Blessing, one child name? Akash. Akash? Yeah. Okay. So you write Akash. Now, if you have 2 children that are called Akash, you're going to say Akash 1. Yeah, Akash 1, or here we have surnames like Surname. Akash C, Akash B, something will come. Yeah. Surname, see? Okay. And then you're going to put in your class. You can put on the wall. So also, so you're going to want one for each child.
तो आपको इस तरीके से एक एक काटना पड़ेगा और एक एक अलग अलग बच्चों का नाम लिखना होगा. I'm gonna put this Sister Blessy. Oh no, I have to be very careful. तो मेरा नाम भी लिख दिया उनने उसमें. So then when you're teaching class, if one child is disobedient and talking, हाँ, अगर जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको लग रहा है एक बच्चा शरारत कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, you say, "Oh, Akish, I'm gonna have to cut from your strip of paper. Be careful." तो आपको बोलना है, आकाश देखो मैं आपका जो ये पेपर है ये नीचे से कट करने जा रही हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से रहो, शांत बैठे रहो. And then he keeps going and he keeps going. और अगर फिर भी वो बात नहीं मान रहा, फिर भी क्लास में शरारत कर रहा है, तो आप Cut a little bit off. नीचे से थोड़ा सा उसको काट देंगे. So now you can see Sis Blessy has a longer paper because she was very good. And Akish, I'm sorry, you have a short paper. या तो अब देखेंगे कि जो ब्लेसी है उनका जो स्ट्रिप है वो बहुत लंबा है, पर आकाश का अब थोड़ा सा कट हो गया है. And actually, only just with the paper, you'll find that they don't want you to cut the paper, so they will behave better. यस, आप देखेंगे खाली इतनी सी एक छोटी सी अगर हम बदलाव अपने संडे स्कूल में लाएं, तो कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि उनका जो पेपर है वो सबके सामने कट हो जाए, काटा जाए. If you want, you can also have a small prize for at the end of class. Everyone who has long strip, you can have like a small candy or something if you want at the end of class. और आप ये भी कर सकते हैं कि जब क्लास उस दिन का जो कक्षा है वो खत्म हो जाए, तो जिसका सबसे लंबा स्ट्रिप है, जितने बच्चों के लंबे स्ट्रिप है, उनको आप एक टॉफी कुछ दे सकते हो. You can also do something like special award ceremony at the end of the month when you're celebrating the month of joy or the month of love. You can also mention all the students that still have a long strip of paper after 4 weeks. और आप या तो ऐसा भी कर सकते हो, पूरे एक महीने के बाद आप देखिए कि किस बच्चे का वो जो स्ट्रिप है सबसे लंबा पूरे क्लास में बना रहा, उस बच्चे को, क्योंकि एक महीने में हम वैसे ही जो खुशी मनाएंगे, हमने ये सीखा है पहले के क्लासेस में, खुशी मनाएंगे, तो उस समय जिसका सबसे लंबा है उसको आप कुछ प्राइज दे सकते हैं, अवार्ड दे सकते हो. So was that helpful? Was that easier to understand? क्या आपके लिए वो मददगार रहा? अभी आपको समझ आया जॉनी ब्रदर? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट मैं समझ गया और बहुत ही अच्छा है और बच्चों के लिए बहुत उत्साहित रहेगा ये. यस, सुवार्ता सिस्टर आपको क्लियर हुआ? हाँ मैडम, क्लियर हुआ. और मेरा जो अनुभव है मैडम बहुत ही अच्छा था, क्योंकि सब बच्चे जो है एक दूसरे का सम्मान करना और शिक्षकों को पढ़ाने देना और एक दूसरे के साथ दया का व्यवहार करना, ये सब जो नियम थे, तो पहले भी नियम थे लेकिन वो अलग नियम थे, लेकिन ये जो नियम थे इससे हमको भी बहुत अच्छा पढ़ने को मिला, सीखने को मिला, बहुत अच्छा सीखने को मिला और बच्चों को भी बहुत अच्छा सीखने को मिला, जो मैंने पहले कभी नहीं सीखा था मैडम. तो अभी मैं बहुत और बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि मुझे और अच्छा सीखना है और बच्चों को सिखाना है. What she Okay, said? very good. Yes, Christy sister, she was saying like there were earlier also there were some rules in their Sunday school and all, but this was something which is very systematic way, and she also made some rules and she saw that children were following those rules and they were more, they are more taking care of each other, and like they made their own rules, and it was a wonderful experience. So that's why she is always waiting for the next class so that she can learn something new here, and then she can practice, practically That's give great. it in her Sunday school. And Sister Suarta, your class is large, right? You Thank you, have a ma'am. big group. Yes, yes, ma'am.
Yes. Yes, ma'am. So large classes. Yes. Large, yeah. Yes. So in your group, Sister Sawarda, you might have to have in your small groups, each leader of each small group of 10 has their own group of ribbons or paper. या क्योंकि सुवार्ता Yes, सिस्टर ma'am. आपका बहुत बड़ा क्लास है, तो आपका वो जो छोटे छोटे आपने हाँ. ग्रुप बना रखे 10-10 बच्चों के, तो उसमें जो ग्रुप लीडर्स है वो ऐसे Yes. स्टेप्स को बनाएंगे, मैनेज करेंगे. Because 80 or 100 हाँ, ma'am. papers or ribbons would be very hard. Yes. Yes. कि आप 100 Yes. पेपर लगा देंगे तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा आपको. Yeah. हाँ, हाँ, Yes. बराबर है. But each coach or each small group leader, they could have the ribbons or paper in their hand. Yeah. Yes, तो ma'am. पर जो एक एक Yes. ग्रुप के जो लीडर है वो आसानी से 10-10 बच्चों का जो पेपर्स है उसको संभाल सकते हैं. Mhm. हाँ, Okay. हाँ, बराबर है. Christy Yes. sister, shall I Yes, ask ma'am. sister Roshni also as she is attending first time? रोशनी सिस्टर, आपको अभी जो एग्जाम्पल दिया वो समझ आ गया? आपके संडे स्कूल में जब बच्चे शरारत करते हैं तो ये जो स्ट्रिप का बात बताया आपको समझ आया? आपका म्यूट है, आपकी आवाज इधर नहीं आ रही. Actually, I think we are not able to hear her. Yes. So, Poonam sister. Yeah. हाँ is it बिल्कुल clear? क्लियर है. हाँ जी बिल्कुल Okay. क्लियर है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. लॉट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स आल्सो कमिंग in a Sunday school because very excited Praise God. childrens and every children carefully listen and doing work very hard. I noticed very artists are there in my class. It's very interesting. Praise God. Very good. Yeah, sister. आप सबको जय मसीह की. या रोशनी सिस्टर बोलिए. मुझे भी अच्छा लगा और मतलब कि बच्चों को भी पढ़ने में इंटरेस्ट हो रहा, मुझे भी पढ़ाने में भी. और अच्छा है ये क्लास. मैं चाहूंगी प्रभु मुझे और बुद्धि ज्ञान समझ दे ताकि मैं अच्छे से बच्चों की सेवा कर सकूं और उन्हें पढ़ा सकूं. इसलिए मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी. वेलकम. आज बहुत मेरा अच्छा. फर्स्ट टाइम है इसलिए. या Sister Christy, she Yeah. is attending for the first time. As I in the starting also I introduced her. So she's attending first time. So she said, "Yeah, I am feeling very good because I can do my Sunday school very systematically now because I am learning new things here." Wonderful. So that's a nice thing. Yes. Yeah. Okay, so I'm going to share our screen because I have so much for you today. It's amazing. Okay, do you see this picture of this person with the spinning plates right here? Do you see this picture with the spinning plates? Yes. आप इधर देख सकते हैं एक बंदा है, आदमी है जो प्लेट्स को ऐसे घुमा रहा है. बहुत सारे उसके हाथ में प्लेट्स है, घुमा रहा है. Okay, so this is your job as children's pastor. We have to keep going with champions, and then we also have to start working on the rest of the year. Okay, so ये है एक जो चिल्ड्रन के जो लीडर होते हैं, जो अगुए होते हैं, तो उनको पूरे साल भर इस तरीके से काम करना पड़ता है. एक के बाद कई सारे चीजों को एक साथ मैनेज करना पड़ता है. So you want to do champions, you keep going with the homework assignments with those students, and then you have to start working on your VBS. हाँ, और जैसे पूरे साल भर जब आपका संडे स्कूल चल रहा है, चैंपियंस का अभी ये जो थीम चल रहा है, तो साल भर एक के बाद एक चैप्टर्स आपको कराने हैं, असाइनमेंट्स करने हैं, और उसके साथ ही आपको VBS की भी तैयारी शुरू करनी पड़ती है. So you have to keep passion in your heart and vision for those homework assignments with champions. तो आपको ये सब करने के लिए आपके हृदय में बहुत जोश बनाए रखना है, अपने मन में और दिल में जोश बनाए रखने की जरूरत होती है. If you drop it, if you forget and you drop it, no one will keep being passionate. They'll all stop. हाँ, अगर आप इनमें से कोई एक चीज गलती से छूट जाए, आपके हाथ से छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि
कोई समझ नहीं पाएगा कि क्या चल रहा, आपका दर्शन क्या है, आप करने क्या वाले हो। So you want to keep those coaches that you have doing the weekly classes, you got to keep them very excited and passionate about champions. And you have to जैसे now हमने start thinking about what's next. जैसे हमने पिछली बार सीखा कि आपके जितने टीचर्स के जितने कोचेस हैं, जो आपके साथ मदद करने के लिए जो लीडर्स हैं, उनको क्या करना है, आपको हर समय जोश में रखना है कि आप करिए करिए करिए, पर आपका एज ए टीचर कार्य क्या है कि नया सोचना, अगला मुझे क्या करना है। So we're going to look today at planning the whole year, because as a leader, you're responsible for the whole year. तो जैसे आप अगुए हो तो आपकी उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि पूरे साल भर का आप पूरा व्यवस्थित ढंग से एक कैलेंडर बनाएं। So your leaders, your teachers want to know that you have a vision and a plan for the future. और तो आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो ये जानेंगे कि आपके पास पूरे साल भर की योजनाएं हैं और आपके पास एक दर्शन है। Okay, so we are going to start with calendar for the year. तो हम इसके लिए हम सबसे पहले जो कैलेंडर है उसके साथ शुरू करेंगे। Okay, so I think I am going to, I don't think I gave this to George, so I will put it in the chat right now, a calendar for you. तो मैं इधर एक कैलेंडर डालूंगी, ब्रदर जॉर्ज मेरी सहायता करेंगे। There you go. Okay, so any calendar works, or you're just going to take a blank calendar. आपके लिए कोई भी कैलेंडर चलेगा, जैसे जो खाली हो। Okay, so here's our main steps. First, you want to note your national holidays and your school vacations. When is school vacation? तो सबसे पहली बात उसके लिए ये है कि विद्यार्थियों के लिए अपने देश के राष्ट्रीय छुट्टियों और स्कूल की छुट्टियों को नोट करें। And then you're going to look at your church calendar and note any items that are important to your church that are going to use the building, the facility, or the people. और उसके बाद आप अपने चर्च कैलेंडर प्राप्त करें और उन वस्तुओं को नोट करें जो आपकी योजना या कर्मचारियों को, मतलब जो आपके साथ जितने स्टाफ है उनको लाभदायक हो। Then you're going to meet with your pastor if you can and see what are his upcoming dreams and passions for the year. और उसके बाद आप अपने पास्टर से भी जरूर मिलिए, क्योंकि उनसे भी आपको जानना है कि उनका इस साल के लिए क्या योजनाएं हैं और क्या दर्शन है। Okay, so then what we're going to do is mark the year up to where we're finished as well. और ये जो है जहां तक अभी हो रखा है वहां आज के कार्य की समाप्ति करें। Okay, I'll show you what I mean आज के here. डेट के साथ। Yeah, can you show that? Yeah. Okay, so here is here's a blank one. Yes, ये Now खाली this वाला one- कैलेंडर है। This is what I mean by marked finished. We finished January and February finished. Yes, मतलब देखिए आपने हमारा अभी इस साल का जनवरी और फरवरी खत्म हो गया है। And so a little bit of March is also gone. और मार्च का भी एक दो हफ्ते खत्म हो गया है, तो उसको Okay. पूरा उन्होंने क्रॉस कर दिया है। So I live in the United States of America, and this is our summer vacation, for school vacation for children. ओके और मैं जैसे यूएसए में रहती हूँ, तो हमारे ये जो इनने मार्क कर रखा है पिंक में, वो स्कूल का वेकेशन है, स्कूल की छुट्टियों की डेट्स हैं। Okay, my church is celebrating our 100th anniversary on September 4th. और हमारा जो चर्च है वो जो उनका एनिवर्सरी है चर्च का, वो उधर उस दिन मना रहे हैं। And I have here, this is Easter. It's a special week. और ये देख सकते हो जहाँ मैंने मार्क कर रखा है, वो ईस्टर का स्पेशल हफ्ता है। And Christmas is special. और क्रिसमस स्पेशल है। And I have here Mother's Day.
और हमारे इधर मदर्स डे है, माओ का Okay. जो दिन होता है। So this is empty. So this just has when is the summer vacation and when are the special weekends. तो आप देख सकते हो कि हमने पहले ही पूरी योजना बना दिया कि कुछ कुछ खास जो कार्यक्रम है वो कब कब है। Okay, now I'm going to put in my plan for children's ministry with little pieces of paper, and I'll show you. अब देखिए मैंने अब अगला ला रखी हूँ जहां मैंने अपने कुछ प्लान बनाए मेरे ये बच्चों के बीच की सेवकाई के लिए। Okay, so next you want to think about what's your decisions for your curriculum. अब अगला जो आपको सोचना है कि आपके पाठ्यक्रम के लिए आपको निर्णय लेने हैं। क्या है अगला निर्णय? Okay, so you're going to choose what Sunday school program, that's weekly classes. और आपको उसमें से पहले तो ये चुनना है कि कौन सा संडे स्कूल क्लासेस आप करने वाले हो अपने चर्च के लिए। Then you want to choose what VBS program, or if you want to do an annual special event for children. और आपको ये चुनना है कि कोई VBS कार्यक्रम आप कर रहे हैं तो उसको चुने, या बच्चों की कोई भी सेवकाई के लिए वार्षिक विशेष कार्यक्रम को चुन सकते हैं। Okay, do you want an Easter program? क्या आप ईस्टर कार्यक्रम चाहते हैं? Or do you want a Christmas program? क्या आप एक क्रिसमस कार्यक्रम चाहते हैं? Okay, so you're going to make those decisions. Now it seems like maybe they're hard, but you can't just go, okay, we're going to do champions. Okay, we're going to do circus, VBS, and then you're okay. It's okay. It doesn't, try not to make it too hard. और आप इसको बहुत कठिन ना बनाएं, बहुत आसान रखें। ये इतना कठिन है भी नहीं, बट आप कर लीजिए। आप जो आपका संडे स्कूल का है वो अलग सा बनाइए और VBS का अलग सा बनाइए। I think the most difficult part of this, sometimes we make it too hard, and that's why we don't do it. We go, I can't do it. It's too hard. हम कई बार क्या करते हैं, इसको इतना कठिन बना देते हैं और कई बार हम समझ नहीं, हमें लगता है कि नहीं मैं तो ये सब नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ करके। But it's actually just keep it super simple and you can do it. और आप इसको बहुत ही आसान रखिए, हर समय आसान बनाइए। Okay, so next question, if you're doing champions, it's got 13 weeks. And there's broken into 3 units that are 1 month each unit. तो आप देखेंगे कि चैंपियंस अगर आप कर रहे हैं तो 13 सप्ताह ये चलता है और उसमें एक एक महीने का एक एक यूनिट है। So do you want a celebration after each unit? Like, do you want to stop classes for 1 week and give out awards? Or how do you want to celebrate each fruit of the spirit, or do you want to wait till the end of 9 months, end of the year, or do you want to do after each 3 months do an award ceremony? आप चाहे तो हर 3 महीने के बाद भी एक अवार्ड सेरेमनी रख सकते हैं, या तो फिर पूरा 9 जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जो हमने आत्मा के फल सीखते हैं, या तो आप पूरा 9 महीने उसको पूरा सीखने के बाद वो उसको कर सकते हैं। So let me ask Brother Johnny, when you finished the love ceremony, or when you finished the Heroes of the Faith curriculum, did you take 1 week to celebrate and finish the program? जॉनी ब्रदर से मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने हीरोज ऑफ फेथ किया या जो दूसरा कोई भी जो हमारा थीम किया, क्या उसके बाद आपने 1 हफ्ता उसको मनाने में लगाया, मतलब सब बच्चों के साथ थोड़ा खुशी मनाने में कुछ? जी बिल्कुल। जब हमने हीरोज ऑफ द फेथ को समाप्त किया था तो कुछ हमने समय लिया। तो ये हमारा पहले से एक प्लान था कि हम बच्चों से रिव्यू करेंगे कि आपका ये कैसा रहा हीरोज ऑफ द फेथ। हमने बच्चों के फीडबैक भी लिए और बच्चों से 1 सप्ताह इस बारे में हमने विचार विमर्श किया था बच्चों से। उसके बाद हमने 1 सप्ताह नहीं बल्कि कुछ
कुछ उनके साथ मतलब मनाया, मतलब जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं ना कि एक छुट्टी मना देते हैं, या कुछ मस्ती मौज मस्ती बच्चों के साथ ही कुछ एक अलग सा एक ब्रेक दिया था आपने उनको? नहीं, संडे को ही बस खाली एक छोटा-सा सेलिब्रेट किया बच्चों के हाँ, संग। जब वही हमने वही बच्चों को वही जानना सर्टिफिकेट चाहते दिए हैं। थे जी, सर्टिफिकेट दिए थे, हाँ, तभी हमने बच्चों को गिफ्ट देके बस ऐसा ही कुछ किया था। Okay, अच्छा, what did he ओके। say? Yeah, he said like they celebrated in after doing Heroes of Faith. First, they had a Sunday where they did a review and feedback time, like what they learned. So they went back and once again they repeated those things one Sunday. And Yeah. then next time when they distributed the award, the certificates, at that time he gave awards also, and like they Okay. celebrated it together. So did you take 2 Sundays, Brother Johnny? 2 Sundays without lessons because you reviewed one and celebrated one? तो जॉनी ब्रदर, आपने कैसे एक संडे को पूरा फीडबैक लिया, जैसे रिव्यू कराया, और उसके अगले संडे आपने सर्टिफिकेट दो छुट्टी ली, दो गैप दिया क्या 2 संडे का? नहीं, ओनली वन, एक में अच्छा, ही काफ़ी एक समय ही दिन। जी। ओके ओके, he Only did one? in one Okay. one, and he completed everything in the same day. Okay, so what I have here, if you can see, I started this for those of you who are starting champions right now. So here's lesson 1, here's lesson 2 of champions. तो आप इधर देख सकते हैं जिन्होंने चैंपियंस का पहला शुरू किया, तो उनके लिए है पार्ट 1 पार्ट 2। So I am using these Post-its that are sticky. हाँ, स्टिकी नोट्स जो हमारे इधर भी मिलते हैं ना, तो वो सिस्टर उनको यूज करती है। Because I always put it in there and then I go, oh no, it won't work. And I have to move it. तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ये जो स्टिकी नोट्स होते हैं उसके एक जगह वो गोंद लगा होता है, तो उसको चिपका देते हैं। तो एक बार चिपकाने के बाद मुझे लगता है नहीं 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 ये नहीं करना चाहिए, मुझे इधर चिपकाना चाहिए, तो फिर मैं उसको चेंज करती हूँ, तो आसानी से निकाल के मैं अलग जगह लगा सकती हूँ। You can also use a pencil and then make sure you have a good eraser. और आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको ये पक्का करना पड़ेगा कि जो आपका रबर है वो अच्छा हो। Okay, so this is all of March. There's 4 lessons. There's 4 lessons in April. And then in May, we finish 5 lessons. So there's 13 lessons for Unit 1 champions. तो आप देख सकते हैं जो चैंपियंस का यूनिट 1 है, उसमें मार्च में 4 पार्ट किए हैं, और अप्रैल में भी 4 पार्ट किए, और मई में 5 संडे होने के कारण 5 पार्ट किए। मतलब हमारे जो 13 पार्ट है, 13 पार्ट है, पूरे के पूरे हो गए। So if you started champions last week and you want to take a day to review and give certificates, that would come here on the first Sunday in June. तो अगर जैसे आपने अभी हमने देखा मई में पूरा आपने मई तक पूरा अपना 13 पार्ट पढ़ा लिए, तो अब जो अगला हफ्ता आएगा वो है जून का जो पहला हफ्ते का जो संडे है, उस दिन होगा जहां पे आप सर्टिफिकेट सब बांट सकते हो और रिव्यू कर सकते हो। Okay, so before I like to put first in the Sunday school, but you also have to think, when do you want your VBS? Yes, मैं तो चाहती हूँ कि पूरा संडे स्कूल का दिखाओ, पर आपको इसके बीच में ये भी देखना होगा कि आप VBS कब चलाने वाले हो अपना। So okay, so I told you here in my country, the school vacation is June, July, and August. So I put the VBS right here in the middle of their school vacation. तो हमारी इधर जून जुलाई अगस्त में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती है, तो इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं जुलाई जो बीच का जो भाग है उस समय मैं VBS चलाऊंगी। So when is your school vacation for India? हमारे इधर स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां कब होती है? कोई बता सकता है? क्योंकि हमारे साउथ में तो अलग होती है और नॉर्थ में थोड़ी अलग होती है।
हमारे क्षेत्र में मैडम एग्जाम के बाद अप्रैल में। अप्रैल में जून में ही ओके होती है, 1 जून को हाँ। छुट्टियां पड़ जाती है, नॉर्मल सी बात है ना। जी। यहाँ पर तो हरियाणा साइड तो 1 जून को ही छुट्टी होती है। हमारे यूपी में हाँ, भी हम जून में हो जाता है स्टार्ट। हाँ, ओके मई के लास्ट डे में हो जाती है, 25 से हो जाती है, पर कंफर्म छुट्टियां एक से ही मानी जाती हैं, 1 जून। Okay, what they actually say, Sis Blessy? yeah sister that I will explain like what is happening in north in India. In north they have leave from June 1st. आप लोग की Okay. जून 1 से छुट्टियां हो रही है ना? हाँ, तो उन they have from June 1st they have leave, but frankly saying in south like I'm in Kerala, so we have from June 1st our classes are starting. Yeah. So April May is the leave time for us South Actually, Indians. Yes. in the Spanish group, we have from 30 different countries. So in Mexico, they leave in June 1st, but in Guatemala, they leave in October 1st is their vacation, October. Oh wow. So हमारे उधर भी जैसे स्पेनिश के ये जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे 30 देश के लोग हैं। तो होता क्या है कि जैसे मैक्सिको में अगर उनकी जून में छुट्टी हो रही है तो ग्वाटेमाला नाम के एक जगह है, वहां उनके अक्टूबर में छुट्टियां होती है। October. Yeah. अक्टूबर में होती है। They Yes. just started school. Very different. Yeah. Okay, so that's why you have to make one for your church because every Yes. state is different. And then you have Yes. to know your church calendar too. Yes. इसलिए आपको अपनी कैलेंडर अपने चर्च के हिसाब से, अपने बच्चों के स्कूल के हिसाब से बनानी है और सब आपको अपनी अपनी बनानी पड़ेगी। Okay, so Brother Johnny, when is your vacation? When are you hoping to do VBS? जॉनी ब्रदर, आपके उधर वेकेशन कब है और कब आप बीबीएस का प्लान कर रहे हैं? हमारे यहाँ वेकेशन वही जून में, और लगभग जून में ही अच्छा रहेगा। अक्सर हम लोग जून में ही करते हैं लगभग ना, 15 जून 10 जून ऐसे। Okay. So they do in the month of June, but like I shared with you, Sister Christy, for from people from Bangalore, I think, I don't know if someone is there today in the class, but they told me like they want to do VBS and they are planning for April. Mm-hmm. So Okay. it will be different. Yeah. Yeah, every state is going to be different. And also we're all in different places for our Sunday school. So Yes. so like this is someone who started last week, Champions. But if you think about it, so Brother Johnny, you're on lesson what lesson are you on now? जॉनी ब्रदर, कौन से पार्ट में हो आप अभी? कमिंग संडे लेसन 10। 10. Yes. So you have 4 lessons left, and we are on March 10th. So you have 1, 2, 3. So you're gonna finish April 3rd. Can you say, Sister Blessy, translate? Yeah. तो जैसे अभी आप ऑलरेडी 10वें चैप्टर को अगले संडे करने जा रहे हो, तो आपके 3 चैप्टर और पार्ट ही है जो बाकी हैं। तो वो सिस्टर अभी उसको देख के आपका चार्ट बना के दिखाएगी ताकि एक सैंपल हम लोग को इस समय मिल जाए। Okay, so that's all that Brother Johnny has left of Unit 1. हाँ, यूनिट ओके नो लास्ट यूनिट। ओके, यूनिट 1 में खाली उनका यही 3 सप्ताह है जो बाकी है। Yeah. So then Brother Johnny can celebrate here on April 10. और अप्रैल 10 को वो सब बच्चों के साथ खुशी मना सकते हैं। There's a celebration party and certificates. और उसी दिन वो अपना सर्टिफिकेट देंगे और ये देख सकते हो अलग रंग का लगाया है उन्हें स्टिकर, तो उस दिन आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हो और खुशी मना सकते हो बच्चों के साथ। Yeah, okay. Yes.
And for you, Brother Johnny, you're thinking VBS in June? जॉनी ब्रदर, आप VBS जून में करना चाहते हो? यस, जून में करेंगे या मई के लास्ट में? Okay, May last or June first week. Okay. So the next question, let me show you, I'll share my screen. Oops, not that one, screen. Okay, the next question is, does your VBS involve a Sunday? क्या आपका जो VBS है वो रविवार के दिन होता है क्या? उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो कि नहीं? Like, do you want to teach champions on Sunday and then start your VBS during the week? Or do you, or like, some people want to teach a lesson on champions on Sunday, then Monday they start their VBS, but the next Sunday they want to have like a celebration Sunday with a VBS theme. Okay. तो कुछ लोग क्या चाहते हैं कि जैसे हमसे कईयों ने बताया, कुछ लोग पसंद करते हैं कि पूरे हफ्ते को वो VBS करते हैं, पर कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे हफ्ते करते हैं, पर संडे के दिन, रविवार के दिन वो उसको मनाते हैं, साथ में मनाते भी हैं. Okay, so do you want 1 week off of champions for your VBS? क्या आप चैंपियंस का जो चैंपियंस का एक दिन VBS को देना चाहेंगे? Is it going to be Sunday? So yeah, it might be like after the VBS that you want to do it. वो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपका जैसे VBS पूरा हो जाएगा उसके आखिरी दिन. So Brother Johnny, if you're going to do your VBS first week of June, this is an example. ये बस एक उदाहरण ही है, जैसे अगर जॉनी ब्रदर पहला हफ्ता करना चाह रहे हैं VBS को, so then maybe Sunday, June 5th, you want to celebrate the VBS at church. और हो सकता है कि पूरे एक हफ्ते के VBS के बाद जो संडे आएगा, पहला संडे जो आएगा उसमें, तो आप सब मिलके थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहेंगे. Yeah, okay. So that's the celebration after the VBS. And so now you know you can start unit 2 here and go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lessons, and then you have the VBS. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर यूनिट 2 जब अगर इनका शुरू हो जाता है, तो जैसे उनने गिनती बताया, उसके बाद वो जो जिस दिन VBS की जो आप खुशी मना रहे हो उसको छोड़ के भी आप कर सकते हो. So somewhere around the end of July, Brother Johnny, you'll be finishing unit 2 of champions. तो जुलाई के आखिर तक इस तरीके से आप करोगे तो जुलाई के आखिर तक ही आप अपने संडे स्कूल को कंप्लीट कर पाओगे, पूरा कर पाओगे. So then the next question I want to share with you is, do I need to eliminate some lessons? अगला प्रश्न जो मेरा है वो ये है, क्या मैं इनमें से कुछ पाठों को मैं हटा सकती हूँ क्या, या हम हटा सकते हैं कि नहीं? In this example, for those of you who are starting champions right now, or you started last week, आप में से इस एक उदाहरण के लिए, जैसे कि किसी ने पिछले हफ्ते ही चैंपियंस का पहला पार्ट किया हो, if you want to take a week for certificates and awards and review after each unit, अगर आप हर एक यूनिट, जैसे 3 यूनिट है, हर एक यूनिट के बाद आप चाहते हैं कि बस बच्चों के साथ उसका फीडबैक ले और खुशी मनाएं, सर्टिफिकेट्स दे, and if you want to take 1 week off to celebrate the VBS, और उसके बाद एक हफ्ते आपका VBS भी चलेगा और उसका जो संडे को आप खुशी मना रहे हो वो अलग है, then
you won't be able to finish all 39 lessons of champions before the end of the year. तो आप इधर देख सकते हो, अगर आप इस तरीके से भी करोगे तो साल के आखिर होते होते आप पूरे जितने इसके पार्ट हैं वो तब जाके पूरे साल के आखिर तक खत्म करोगे. So you'll have 2 lessons that you can't finish. तो हो सकता है कि 2 पार्ट ऐसे हो जाएंगे जो आपके कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप. So I recommend that you look at the teacher's book and you pick 2 to eliminate. Okay, means they can leave 2 chapters. Yeah. तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी किताब को देखिए, जो बुक है उसको देख के आप 2 हफ्ते तो आप अलग कर सकते हो उसमें से. So 2 of पार्ट को course, अलग कर सकते हो. so can you see here in my example, I finished here that in December, just week 11, there's not time for lesson 12 and 13. तो आप इधर देख सकते हो कि मेरे पास पार्ट 12 और 13 के लिए अब जगह ही नहीं है, क्योंकि दिसंबर 11 तक मैंने जितना मैं पार्ट कवर कर सकती थी वो किया है. So I suggest you look at the lessons and you go, do I want lesson 12 and 13? And you go, oh, I like number 13. So then you go eliminate lesson 6. तो जब आप ऐसे देखते हैं तो पूरी किताब में आप देखिए और उसमें से कोई भी 2 भाग अगर आपको लग रहा है आप नहीं करा पा रहे हो तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो. Because part of systematic classes is you taking responsibility for your students and what they need. तो क्योंकि इस जो आप सिस्टमैटिक जब सही तरीके से जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये आपका उत्तरदायित्व होता है कि आप निर्णय लें क्या उनके लिए सही है. And the curriculum is actually a tool for you to use, but you're not stuck with every lesson. आपके लिए ये जो करिकुलम है ये बहुत ही सरल है, पर आपको ऐसा नहीं करना कि आप आसान तरीके से पढ़ाइए. ऐसा नहीं कि अरे ये पार्ट भी है मैं इसको क्या करूं, कर ही नहीं पाऊंगी करके. So here are some extra tips for when you're making your calendar for the year. तो जब आप अपने पूरे साल भर का कैलेंडर बनाएंगे अपने चर्च के लिए, अपने संडे स्कूल के लिए, तो कुछ टिप्स इधर हैं. So start simple and don't try to make it more complicated than you need. सरल बातों से शुरुआत करें, फिर आवश्यकता के अनुसार जटिलता को जोड़ें. यदि आपको एक बड़े कैलेंडर की आवश्यकता नहीं है तो उसका उपयोग ना करें. You want to under promise and over commit. बहुत ज्यादा आप वायदे करते ना रहे, उसके नीचे ना आ जाए, और अधिक समर्पण भी मत करिए. So basically, it's real easy when you're making a calendar to want to make a lot of promises. Then we're going to do a special Christmas program, and then we're going to do that. And you make these huge promises, and then when the year comes, it's very difficult. हाँ, ये वादे के तले या अधिक समर्पण का मतलब ये है कि आप कई बार इतने बच्चों से अपने संडे स्कूल में वगैरह इतनी बातें वायदे कर देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम इसको ऐसा बनाएंगे वैसे, पर आप कर नहीं पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. So for Christmas, maybe you save a week for a special Christmas program, but maybe in September you decide, okay, yeah, we have enough volunteers to do it, let's do it. ओके, तो जैसे कि आप पहले आप सोच के रखें कि हाँ ठीक है, क्रिसमस के समय आप लोग सब मिलके बहुत सारी खुशी मनाने वाले हैं, तो पहले आप उसके लिए एक समय को अलग रखें. I have a video for you today, but I have run out of time. मैं जानती हूँ मेरे पास एक वीडियो है, पर मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा आज समय हो चुका है. So the video is a handshake, like a special handshake where you go, ooh. ये कुछ हाथ मिलाने के कुछ तरीके हैं, बहुत खास अलग-अलग तरीके से. Maybe I will show you the first part of it. Let's see here. I'm going to show you
Just मैं a उसका little bit. या मैं थोड़ा सा उसका दिखा देती हूँ आपको, झलक दिखा देती हूँ, पूरा तो देखने का समय नहीं होगा। Also, Sister Blessy is making this video in Hindi. और हम इसको हिंदी में भी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके पास हिंदी में हम ग्रुप में डालेंगे। We will put it in the group. You can add another one. Okay. Get your partner. Get ready. Yeah, stretch. Be ready. It's me and my sister, Suki. Ready? Here we go. 1, ये 2, मेरी बहन है, 3, सिस्टर 4. सुखी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Popcorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So also we have instructions at the beginning. Also known as the champion's handshake. Okay. The first move, you're going to start by shaking each other's hand. Oh wait. Get ready. Get a partner. Everyone has a partner. Yeah. Okay. Start with a simple handshake. Then spin with your thumb like this and do another one. And then we're gonna make a fist and go like this. Boom, boom. Okay, that. Okay, so were you able to see like the handshake? So you can go, then with the thumb, and then. तो आपने अभी देखा कि कैसे कैसे हम हाथ मिला सकते हैं अलग अलग तरीके से, ताकि हमारे बच्चे बहुत ही मजे करें। So this is a fun activity where the students in your class, you can break them up and they do in pairs where they do the handshake. ये कुछ ऐसे गतिविधियां हैं, कुछ चीजें हैं जो आप अपने बच्चों के साथ मजे करने के लिए कर सकते हैं। So we call it the champion's handshake. और हमने इसका नाम दिया चैंपियंस हैंडशेक, चैंपियंस का हाथ मिलाने का तरीका। So also we have a piece with boxing where they go like this and they go ooh, and they do like little people boxing. और हमारे उसमें कुछ ऐसा भी है जैसे उन्होंने अभी हाथ से दिखाया कि बस बॉक्सिंग के अंदर हल्का सा ऐसे ऐसे हाथ से करके भी हम कुछ करेंगे। So that is oh boy. That is a fun activity you can use for your class. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप अपने क्लास में कर सकते हैं। Okay, so next week we're going to start introducing the circus VBS. अगले हफ्ते से हम सर्कस VBS के बारे में भी सीखेंगे। So, I can show you here this. They're still finishing the languages this week. It'll be ready next Thursday. तो अगले थर्सडे तक हमारे पूरा ये जो सर्कस का ये थीम है ये पूरा तैयार हो जाएगा। And so we have different fears that we're facing. ये इसमें है कि कैसे जो हमारे बच्चे कुछ डरों को अपने जीवन में देखते हैं उसके बारे में भी है। So this theme goes with the Easter week. So this can be used for Easter or it can be used for your VBS. ये चाहे तो आप ईस्टर के समय भी कर सकते हैं, नहीं तो आप VBS के समय भी कर सकते हो। So like lesson 1 is Palm Sunday, and then Peter denies Jesus 3 times. तो आप देख सकते हैं कि जो लेसन पार्ट 1 है वो संडे के लिए है और पाम संडे जो होता है उसका है। फिर जो पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को नकारा उसका भी है। And then we have Jesus's death on the cross and his resurrection is lesson 5. यीशु का जो क्रूस पर वो मारे गए उसके बारे में है और उसके बाद यीशु के वापस जी उठने के बारे में भी है।
So this curriculum does not have any music. ये जो हमारा करिकुलम है इसमें म्यूजिक नहीं है, But if you want music for your VBS, we do have one that we're promoting this year. That's the Jungle VBS. अगर आप चाहते हो आपके जो VBS में बहुत सारी म्यूजिक हो, गाने हो वगैरह, तो हमारे पास एक है, जंगल नाम का एक VBS है। So you can choose which one you want to do, but the Jungle VBS music is in English. और जो जंगल का VBS है उसका पूरा म्यूजिक वैसे अभी अंग्रेजी में ही है। Okay, so your assignment this week is to work on your annual children's ministry calendar. इस बार की जो टीचर्स का असाइनमेंट, शिक्षक का अमलीकरण है, वो है अपने बच्चों की सेवकाई के वार्षिक कैलेंडर पर काम करें। So also remember that you want to keep doing your champions homework assignments with the students. और साथ में आपको वो नहीं भूलना कि आपका जो बच्चों के साथ जो असाइनमेंट चल रहा है, अमलीकरण चल रहा है, वो भी करते ही रहना है। Also, you can use Google Calendar to plan your year. It does not have to be paper. You can do it digitally. और आपको पता होगा गूगल में एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको गूगल कैलेंडर कहा जाता है। अगर आप पेपर में नहीं करना चाहते, आप गूगल कैलेंडर में भी इस तरीके की चीज को पूरा कर सकते हो। Even in Google Calendar, it's very easy to move your VBS around. If you think, oh, I'm going to put it in June, and you go, wait, no, I want it in May. It's very easy to move in Google Calendar. और गूगल कैलेंडर में ये करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जैसे हम कंप्यूटर में कुछ को भी डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं और वापस टाइप कर सकते हैं, उस तरीके से बहुत आसानी से आप गूगल कैलेंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, so remember your main thoughts is when should I plan my VBS? Do I want an Easter program? Do I want a Christmas program? And when am I going to do my systematic Sunday school? तो आपको ये देखना है कि पूरा आपके संडे स्कूल का पूरे साल भर का, कब आप क्रिसमस करने वाले हैं, कब आप ईस्टर करने वाले, कब क्या करने वाले, उसका पूरा एक सही तरीके से कैलेंडर को बनाना है। If you feel that you are not ready to make the decisions this week, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप ये सब नहीं कर पाएंगे, तो I'm going to ask you to just do it as practice. हाँ, अगर आप डिसीजंस, मतलब इतना जल्दी आप एक निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि कहाँ किस दिन मुझे करना है, पर एटलीस्ट आप इतना करना कि एक कैलेंडर को लेके हल्का सा जस्ट करके देख लेना, एक कोशिश करके देखना। You can just don't show it to anybody, don't show your teachers, don't show your pastor, just show me. आपको अपने पास्टर को भी नहीं दिखाना, अपने टीचर्स को भी नहीं दिखाना, किसी को मत दिखाइए, पर आपने जो कोशिश की है वो आप मेरे साथ जरूर बांट सकते हो। If you do it for practice, you're going to find, okay, that's not very hard, I can do this. क्योंकि आप अगर एक बार इस कैलेंडर को बनाने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना अभी हमें दिख रहा है। All right, so that is our lessons for this week. You're going to keep this plate spinning from champions, start planning your VBS and get your calendar going. हमने जो पहले एक तस्वीर देखा था उसमें वो स्पिन कर रहा था, घुमा रहा था ऐसे ऐसे, तो हमें अपने उस प्लेट को ऐसे घुमाते रहना है। मतलब क्या है, चैंपियंस एक जगह पे चलता रहेगा, दूसरे जगह पे आपको VBS का भी प्लान करना है, इसको रोकना नहीं है, इसको भी चलाते रहना है, सबको चलाते ही रहना है। Fantastic. बहुत अच्छा। Okay, questions. Does anybody have any questions or comments? I'd love to hear how your weeks are going and what's your favorite thing you've been learning, or if you have any questions on the calendar. अगर आपके पास इस समय कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं और सामने ला सकते हैं।
मैंने इस बार एक नाम देखा, सोमा इंगले। शिल्पा सिस्टर, अगर आपके साथ कोई हैं या कोई नए हैं? He's my father-in-law. He's working with me in a group A. Oh, that's wonderful. That's wonderful. So, sir, Today I he saw has a it. new name, Soma, Yes. Soma English. So I was asking her because both the surnames were same. So I Yes, asked yes. her if it is someone with you. So she said her father-in-law, isn't it? Yes. So, sir, आपके father-in-law? Yeah. So Yes, yes. his father-in-law who is helping her. Oh, great. Yes, thank you. That's so nice to hear, sister. So please, you can ask your questions. मतलब अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है, चाहे कैलेंडर के हो, चाहे आपके संडे स्कूल पहले जो चैप्टर्स कर रहे हो, कुछ भी प्रश्न है तो इस समय आप पूछ सकते हो। Hello, Uncle. Yeah. Praise Lord. Yes, praise the Lord. बहुत अच्छा लगा सुन के। We are happy. मैं भी एक ग्रुप चला रहा है बच्चों का हमारे विलेज में, Okay. पुणे के पास। मेरी Okay. बहू है, हम दोनों Very good. ये मिल के लड़की का करोगे चलाता आप। मैं छोटे छोटे बच्चों। अच्छा, very good. हाँ, Sister, uncle is पापा also. मैजिक शो करते हैं ग्रुप में और मैजिक शो अच्छा। बच्चों में, मैजिक शो अच्छा। कभी कभी बच्चे कोई दिखाए तो विश्वास रखते हैं। हाँ। दूरी रहती ना, वो काटना और वो हाँ। बांधना दोनों, वो हाँ। क्या, हाँ मैजिक से वो ये करना, फिर बोलते हमारे Okay. सामने काटी, कैसा का एक डोरी हो गई पूरी की पूरी, ऐसी तरह से। Yeah. हाँ बच्चों को फिर Yeah. वो था, कोई भी चीज ऐसी इम्पॉसिबल नहीं, यदि प्रभु पर विश्वास करके पढ़ाई करेंगे, कुछ भी करो विश्वास से, फिर समझ गए, देखो ऐसा लगता कि होगा क्या, मैं पास होऊंगा क्या, यदि हम जिद Yeah. करेंगे तब पूरा होगा। उससे फिर Okay. उनको सिखाना है। थैंक यू। Yeah. So, Sister Chrissy, he is also doing children ministry in a different area from where Shilpa sister is doing. It's a different, and he is doing in a different area. And he shows magics, and through magics also he shares the gospel. Oh, So fantastic. that's the best thing. Yeah. So he's also there today in the training. That's That is wonderful. great. Yeah. Yeah, we got in between, I think, Prabhakar, pastor, he said he could not join in time due to prayer. Just came back. Sorry for the late. That's fine. We can understand. कैलेंडर को So- लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। जहां तक मुझे समझ आया हॉलीडे मार्क करनी है, देन हाँ। उसके बाद हाँ वीवीएस को लेके, क्योंकि अभी तो हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं, फिर देन वीवीएस का क्या है, मुझे ये नहीं समझ आया। हाँ, Sister Poonam is asking, she's having a doubt about the calendar. She's saying now we are doing champions, and suddenly if we will bring VBS, how we will, manage that? She's confused now. Yeah, it's hard to do this. We want champions to keep going every week. हम लोग, Go ahead. या हम लोग चाहते हैं कि चैंपियंस हर हफ्ते चलता रहे रविवार के दिन। But also remember when we started this program, Sister Poonam, where I said, okay, we're going to start champions, but I said, okay, you have to start this week. And sometimes it was hard for people to understand. I don't understand. It was easier to have like 4 weeks of training before you start. सिस्टर पूनम, आपको ध्यान है कि जब हमने चैंपियंस का शुरू किया तभी भी सबको बहुत मुश्किल लग रहा था कि ये सब हम कैसे करेंगे। So it's easier for the VBS if I give you 4 weeks of training before you do the VBS. तो आप ये देखेंगे कि अभी जो आपको संडे स्कूल के लिए मिलता है, हर हफ्ते एक हफ्ते पहले ही आपको ट्रेनिंग मिल रही है, उसी तरह VBS के लिए भी आपको पहले ही VBS की ट्रेनिंग मिल जाएगी,
ताकि आपको जब समय लगे, जब आपका VBS आप चला सकते हो, उस समय आप आसानी से VBS चला पाओ। तो ये 2 सर्टिफिकेट होंगे, VVS के अलग होगा क्या सर्टिफिकेट? हाँ, VBS का थीम अलग है। Sister, she is asking, so this certificate will be different. For VBS it will be different, and for Sunday school it is different. Yes, they're different programs. एक्चुअली ये जो VBS है वो अलग करिकुलम है, वो अलग थीम रहेगा। जैसे अभी सिस्टर ने दिखाया सर्कस है, जंगल है, वो सब अलग थीम है। चैंपियंस तो अभी मैं दीदी मेरा तो ये थोड़ा इशू होगा, क्योंकि एजुकेशन का ज्यादा मैं टॉपिक नहीं छेड़ सकती, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं वो इलिटरेट हैं, और तो मतलब उस हिसाब से मुझे बहुत हिसाब से ही उनके साथ डील करना पड़ेगा। Okay, Sister Christy, she is saying like most of the children are illiterate from the, as she said earlier, from the slum. So it is very difficult to bring, you know, two programs together because they will not understand. She is doing champions. She want to concentrate in that. Yeah. What happens, Sister Poonam, is when you finish 3 months of champions, even children in the slum, they were going to be a little bit bored and go more champions, because it's 39 lessons. It's all year. It's champions all year. सिस्टर पूनम, होता क्या है, जैसे पूरे 39 चैप्टर्स हैं, पार्ट हैं, उसमें पूरे साल का है, तो होता क्या है कि एक यूनिट के बाद दो यूनिट के बाद बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगता है, अरे यही हम थीम को पढ़ेंगे क्या, कुछ अलग होना चाहिए ना बीच में। So for the children, they're not 2 programs at the same time. और तो बच्चों के लिए ये 2 कार्यक्रम एक ही समय पे नहीं चल रहा है। You're going to do 3 full months of champions with the children. आप 3-4 महीने बच्चों के साथ चैंपियंस कर रहे हैं। And then you're going to do a special week where you just do the VBS that's a different theme and special. और उसके बाद आप उसके बीच में एक हफ्ता पूरा बच्चों के साथ VBS चलाते हैं, जो कि उनके लिए कुछ खास होता है, कुछ अलग होता है। मतलब चैंपियंस को वहां ब्रेक देके देन उसके बाद VBS को एक मतलब ये लगा लो एक स्पेशल उस ओकेजन की तरह सेलिब्रेट करना है, जिसको हम VBS दे देंगे नाम। हाँ, VBS होता है, वेकेशन बाइबल स्कूल होता है ना सिस्टर, तो वो क्या है, बच्चों को जो बीच में जो एक छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां होती है, तो बच्चे घर पे रहते हैं, स्कूल में नहीं जाना होता उनको, तो वो एक हफ्ता कोई चुन के हम बीच में पूरे एक हफ्ते की उनको वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, VBS जैसे खुशी मना सकते हैं। Actually, Sister Christy, like where she is working, it's a slum na, so it's not a church even, so it's slum area where she is just going and preaching and just giving these classes. क्योंकि मेरे को थोड़ा ये भी इशू आया था, हाँ, going every day, yeah, मेरे को ये भी इशू था, you know, in so you can you do a VBS? मेरे को ये भी थोड़ा इशू था, जैसे अब जहाँ हम कर रही हैं वहां पर वो कोई मतलब परमानेंट जगह नहीं है, तो मैं जैसे कील वगैरह भी नहीं ठोक सकती, तो रूल्स वगैरह लगाने थे, मतलब थोड़ा है, फिर भी मैं अपनी तरफ से ट्राई बेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, वर्सेस जो आप अपने इलाके में कर सकते हो वो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sister Christy, actually she's saying like when the place where she's teaching, sometimes there is no facility even, like no room, no place where she can go and bring all these students together. But she is doing some adjustment where she get like, as you said last time, for the rules to be put in the classrooms, you know, in their classes. So at present, she's not having any classes even. So she is just using the place where she gets and she's teaching children. Actually, Sister Poonam, I also have done work in the street, very similar. Yeah, Poonam sister, Sister Christy ने भी गली में है ना ऐसे कार्यक्रम ऐसे Sunday school को चलाया है. One year I had 4 different children's ministry every week. One was in church, and one was in a public school, and one was in the street.
Okay. तो एक तो मैंने ऐसे चर्च में भी हाँ, कराया I है, एक understand. तो I गली में भी understand, कराया Didi. है. I Yeah, understand. yeah. For you in translation is not. Yeah, sister, you can carry on. She So understands in. I found it easy to use the same lessons because it was too hard for me to do something different for the church and then something different for the street. Actually, the stuff from the church works in the street as well. Okay. I think Sister Poonam, it's nice if Leslie translates because there are some that can't understand. Maybe you understand, but not everyone Yeah. can understand the English. या Yeah. जैसे पूनम के जैसे कई लोग हैं जो इंग्लिश थोड़ा उनको समझने में मुश्किल भी हो जाएगा, तो उनके लिए ट्रांसलेट करना सही रहेगा. तो सिस्टर क्रिस्टी यही बोल रही है कि कोई भी ऐसी बात हो, मैंने भी ऐसे चलाया, मैं भी जानती हूँ, पर आपको ये देखना होगा कि आप अपने जगह में रहते हुए जो सबसे अच्छा कर सकते हो, आप अपने तरीके से उसको कर सकते हो. करिए. So for Sister Poonam, your decision when you're making your calendar is, am I gonna try a VBS in the slum? That's your decision. तो हाँ, वो सिस्टर पूनम का निर्णय होगा, क्या वो स्लम में मतलब जुगी में क्या वो ऐसा कुछ VBS करना चाहेगी कि नहीं. So it's okay, Sister Poonam, if you say, nope, I'm not gonna do it. Whoop. या तो अगर सिस्टर पूनम ये निर्णय लेती है मैं VBS नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो बस आपको ये करना, आपके डिसीजन में से वो हटा देना है. Because actually a VBS is kind of like a whole week where you go every day all week for 5 days. Yeah. Pardon, sister? A VBS is often a situation where they go every day for 5 days, like Monday, Yes. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Continue जाना ये got पड़ेगा. it. ये तो अभी जो VBS होता है उसमें ये होता है कि उनको 5 दिन के लिए कम से कम हर रोज जाना होगा. So one time I did in the street a VBS and I got like 80 children and I went every day. Also there was no restroom, no facility. मैंने ऐसे भी VBS चलाए जहाँ पे मतलब कोई ऐसा जो हमारे लिए बाथरूम टॉयलेट जो होते हैं वो भी नहीं है और बहुत मुश्किल था ऐसे जगह पे. I did Monday and then Tuesday, same with a VBS program I used. मैंने सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन वही VBS प्रोग्राम करने के लिए मैं उधर थी. And on Wednesday, none of the children showed up. 0, none. और आपको पता है कि बुधवार के दिन एक भी बच्चा नहीं था उधर. I said, what happened? And then 30 minutes later, all the children showed up. मैं आधे घंटे तक तो मैं इंतजार की, मैंने कहा एक भी बच्चा नहीं है, हुआ क्या है, पर मैंने देखा आधे घंटे के बाद एकदम से सब बच्चे पहुंच गए. So they told me there was a big fight on the street that morning, and one kid beat up another kid, and he was very badly beat up, he was bloody and everything, and so they took him to the hospital. और किसी ने फिर बताया कि एक बच्चे ने गली में दूसरे बच्चे को मारा और बहुत ज्यादा मारा कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा. Yeah, so what I found was then the 2 boys that got in the fight showed up to the VBS like an hour later after the hospital. और सबसे अलग बात ये रही कि जो लड़ाई कर रहे थे वो हॉस्पिटल से आने के बाद 1 घंटे के बाद वो VBS में पहुंच गए. And one of them still had blood on his shirt. मैंने उनके देखा उनके शर्ट में वो खून के धब्बे तभी भी थे. So that's why it's actually very fantastic, Poonam sister, for you to be in the slum, and you can use the same programs that we use in churches, and you might need the ribbons more because they're gonna misbehave more or be more rowdy. Yeah. So आप पूनम सिस्टर अपने तरीके से उसको कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ और शरारत करने वाले ज्यादा बच्चे हैं. शरारत नहीं, उनके मॉम डैड है ना ड्रंकर है, too much drunker. Even women also drunk over there. What's she saying?
Sister, Or actually, their prostitution, parents, that area is no full of prostitution and too much dirt over there. But let's see, I will handle. I don't. yeah, God will give you grace, Sister Poonam. So she's saying a lot of their parents are into prostitution and they are drunkards. So it becomes difficult to handle in those situations. Yeah. So she's managing the champions, Sunday school. So she feels like that is more comfortable for her. Yeah. Yeah, that's So- what Sister Christy told. Yes. Sister Poonam, it's okay. You can say no VBS. It's totally okay. Yes. Yeah. However, I am going to start teaching it for 4 weeks, this new program, but I want because Brother Johnny needs to have his VBS ready for June while he's also doing champions. बट मुझे जो है VBS की क्लास अगले हफ्ते से लेनी होगी, तो अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आप नहीं VBS करना चाहते हो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, जैसे जॉनी ब्रदर है, मधु पास्टर है, प्रभाकर पास्टर, सब लोग चाहते हैं कि वो VBS को भी करें, तो उनको VBS की भी ट्रेनिंग की जरूरत है. So Sister Poonam, what you can do is just kind of learn the new program and then you decide whether or not you use it. It's okay. तो सिस्टर पूनम, आप ये कर सकते हैं, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने रह सकते हो और आप इसको देख के सीख सकते हो कि कैसा है ये कार्यक्रम. दीदी मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर मैं उन बच्चों को घर बुला पाऊँ, if it is possible, तो I call you dot students in my home. Okay, that's wonderful. Yeah. So she is planning in future, if she can bring all the children to her home, she will try for that. Yeah, it's hard. On the street or in a slum is very difficult and you need extra prayer. Yeah. Mhm. Sister, I think Brother Johnny is also waiting for some question. He's having Yeah, some question. Brother Johnny has a question. Yeah. ओके, थैंक यू. बीबीएस को लेकर तो सवाल है, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए बीबीएस का सवाल मैं जो है बीबीएस के संबंध में कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं शायद ग्रुप में भी डाल दूं, अन्यथा कमिंग नेक्स्ट मीटिंग में मैं उसमें आपसे साझा करूंगा. लेकिन सवाल मेरा इस समय ये है, ये गूगल ये जो कैलेंडर बताया गया है. जॉनी ब्रदर, एक मिनट मैं इतना बोल लूं. सिस्टर क्रिस्टी, ही इज सेइंग like I know the time is gone ahead a lot, so he's not asking any question regarding VBS at present, but he has many questions and he will be maybe putting those questions in the group, but now he is asking something else. Okay. ठीक है, तो इस समय सवाल मेरा ये कैलेंडर को लेके है. जो ये कैलेंडर है, अभी ये कैलेंडर में थोड़ा सा मैं समझा नहीं इसको, मतलब प्लानिंग कैलेंडर, जैसे कि मैंने अभी इसको अपने मार्क से इसको कंप्लीट किया है. जैसे कि ये है कि ये जनवरी फरवरी तो हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसमें प्लानिंग कैसे करनी है करके, उसमें अंडरलाइनिंग करनी है, फिर उसको कैसे लिखना है करके ना, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा. Sister, it's not for him. This calendar is not that clear, so he wants more help in that. So, sister, is it possible for you to make a video for this calendar, just a video, and send it in the group? So I just need to know what part was not clear. Because I would teach it the same in a video as I just did. Do you have a specific question, Brother Johnny? जॉनी ब्रदर, कोई आपका कोई एक खास कोई भी ऐसा प्रश्न है, कोई भाग है जो आप पूछना चाहते हो? क्योंकि कौन सा भाग आपको समझ नहीं आया, वो उनको सब पता नहीं चला. ठीक है, जैसे कि अब हमने जैसे कि अभी मैंने इसमें फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये कैलेंडर बनाया, ठीक है. अब जैसे कि मुझे बीबीएस अपना करना है जून में, ठीक है, तो मैंने इसमें ब्रैकेट में he made a calendar like this and he is planning for VBS in the month of June. Okay. ठीक है, तो जो कैलेंडर बनाएंगे उसमें इस तरीके से अंडरलाइनिंग कर दें क्या, ऐसा कुछ? What did you say? मतलब समझी नहीं ब्रदर, क्या प्रश्न क्या है आपका? उनने तो साफ दिखा दिया था ना पूरा.
तो हो सकता है हाँ, शायद मैं पूछिए। नेटवर्क इश्यू इसलिए हाँ मुझे हाँ, समझ नहीं आया। एक बार, हाँ, एक बार पूछिए, क्या आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है? मार्क करना मतलब जैसे उनने सिस्टर ने वो पेपर कट करके लगाया था वो? जी जी, ऐसा ही कुछ। ये जो ओके। होमवर्क में मांग रहे हैं कि आपको कैलेंडर हमें प्लानिंग करके फॉलो करके देना है, तो वो हमें अपने इसमें प्लान को दर्शाना है कि हम कब कब क्या करना है, कौन से वार्षिक कैलेंडर में ये ओके कैसे उसको ओके दिखाना है ओके करके ये मैं ओके पूछना सिस्टर, चाहता he's asking like you said na, they need to make a sample calendar, so how you want, shall they put the do some mark, put a mark and write it what they have planned it, how to Yeah. show you that? Yeah, you Yeah? can make your real calendar, Brother Johnny. You can make your actual calendar. हाँ, आप अपना किसी भी तरीके का कैलेंडर बना सकते हो ब्रदर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना खुद का भी बना सकते हो आप। I think you're एक- ready, Brother Johnny. You have a plan. You know you're on lesson 9. आपको वैसे ही पता है क्योंकि आप तो अभी पार्ट 9 में ऑलरेडी पहुंच चुके हो। So you know, Brother Johnny, you're going to finish in March, you're going to finish unit 1. You know this. आप जानते हैं कि मार्च के महीने में आप यूनिट 1 को पूरा कर लोगे। So you're going to need to start, you're going to need to have an award ceremony in April, and then you need to start unit 2. और आप ये देख सकते हो उसके बाद अप्रैल में आप अवार्ड सेरेमनी करोगे, उसके बाद आप अपना यूनिट 2 शुरू कर दोगे। And you're going to be about halfway through unit 2 when it's time for VBS. और जैसे ही आप यूनिट 2 कर रहे होगे तभी आपका VBS का समय शुरू हो जाएगा। So you want to do 1, 2, 3, 4, 5, 6 lessons in unit 2, and then you'll stop for VBS. और 6 लेसन आप यूनिट 2 में करेंगे और उसके बाद आपको एक ब्रेक देना पड़ेगा और अपना VBS को चलाना पड़ेगा। And then you're going to finish the rest of unit 2 in June and July. और जैसे ही आपका VBS का हफ्ता खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर आप उसी को जो आपका यूनिट अगला चल रहा है, जो लेसन चल रहे हैं, उसको आगे आगे करते रहना है। And then you can celebrate in August and do award review and award ceremony for unit 2 in August. और जुलाई के आखिर तक आपका पूरा खत्म हो जाएगा और अगस्त में आप अपना जो सेलिब्रेट कर सकते हैं। So have you decided, Brother Johnny, the first part, do you want to do something different for Easter, or do you want to just keep doing champions? तो क्या जॉनी ब्रदर आपने क्या प्लान किया है? आप ईस्टर में भी कुछ करना चाहते हैं या चैंपियंस ही आप करोगे अभी? सॉरी, दोबारा बोलिए एक बार स्पष्ट। हाँ, मतलब आप चैंपियंस को कंटिन्यू करना चाहते हो जैसे, या ईस्टर में आपका संडे को कुछ और प्रोग्राम भी है? Or do you want to do something different for like Holy Week and Easter? संडे को तो कुछ प्रोग्राम नहीं, चैंपियन ही हम करेंगे। चैंपियन, okay, he is doing champions. Okay, so that now you know, and you can just put it in your calendar. Okay, we're going to keep going with champions. तो आपको अभी पता है कि अगले हफ्ते भी आप चैंपियंस ही करने जा रहे हो, तो आप उस कैलेंडर में डाल सकते हो कि आप चैंपियंस को कंटिन्यू कर रहे हो। Yes. Okay, so Brother Johnny, you're going to have, because you started in January, you're going to have a few more weeks to fill. तो आपके अब कुछ और महीने भी है जो आपको अब इसमें भरने होंगे। So you need to either maybe take 2 weeks for VBS, or maybe take in December, do a program that's 3 weeks long in December, something like that, to finish your year. या आपका पूरा साल खत्म करने के लिए या तो आप दिसंबर महीने में 3 हफ्ते भी ले सकते हो या 2 हफ्ते भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। So like in the example you made, Brother Johnny, where you have each month, so you need to know is that month 4 weeks or 5 weeks long? हाँ, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, कुछ महीने 5 हफ्ते के होते हैं, कुछ महीने 4 हफ्ते के होते हैं, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा महीना कितने हफ्ते का है।
so that you can count the exact Sundays. How many Sundays are in each month? ताकि आपको पता चल जाए कि हर महीने कितने कितने रविवार के दिन हैं. So May has 5 Sundays. मई महीने में 5 रविवार है. So that will help you figure out where your lessons fall in Champions. तो इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि आप चैंपियंस के आपके कितने पाठ और बाकी हैं. Did that help solve it? Do you have any other questions? क्या आपके पास और कोई प्रश्न है? नहीं, ओके, थैंक यू. बीबीएस को लेकर है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट मीटिंग में उसको पूछूंगा या ग्रुप में डाल दूंगा मैं, क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा भी हो रहा है, क्योंकि मैं भी Yes. Sister, as time is too much, actually, he is not asking the question for VBS that he will put in the group, but this is clear now. Okay, so if you have any more questions on the calendar, Johnny, put in the group, and I'm happy to do a video and answer the question, but I need to know the questions because sometimes I struggle to know what part was not clear. Yeah. कई बार क्या होता है, मुझे साफ साफ प्रश्न पता होना चाहिए ताकि आपके प्रश्नों का मैं सही से उत्तर दे पाऊं. तो इसलिए मुझे समझ आना चाहिए कि आपने क्या प्रश्न कर रहे हो. अभी के लिए समझ आ गया है? Yes. And if anyone else has a question, you can put in the group as well because we're out of time. Yeah, हमारा समय बहुत हो गया है. अगर कोई और प्रश्न है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हो. सिस्टर स्वार्था, क्या आपको कुछ क्वेश्चन था क्या? जी नहीं मैडम, मैं तो अप्रैल महीने में जो है ना वीबीएस कर लूंगी. अच्छा. Oh, she's saying she will do VBS in the month of April. Okay. Yeah, so that's why we have to hurry now and get you the lesson, the training for the VBS. Yes. इसीलिए हम अभी आपको ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं VBS की. What week, Suwarta sis, are you doing a VBS? Suwarta sister, आप कौन से हफ्ते में कर रहे हो VBS? मैं फर्स्ट में मैम, अप्रैल के April first week. Yeah. Oh, that's very soon. Yes. वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा. हाँ, लेकिन जब तक मैम सबको छुट्टी लग जाती बच्चों को, वो भी फ्री हो जाती फिर. अच्छा. स्कूल की छुट्टी लग जाती. Yes. अच्छा. Yeah, in her place also sometimes what happens when it's summer vacation starts, then before like they go somewhere else, they do the VBS. Yeah, good idea. Before they're all gone on vacation, also that happens. Yeah. Yes. Okay, so I'm gonna do 4 weeks of VBS training. So Sister Swarta, you're only gonna get 3 weeks before your VBS starts of training. Yes. हम लोग 4 हफ्ते का VBS करने वाले हैं, पर सिस्टर स्वार्था को 3 हफ्ते का ही VBS मिलेगा. But that's okay. You're gonna do great. Yeah, पर कुछ नहीं होता, आप सीख जाओगे बहुत अच्छा कर लोगे. Yeah. Yes, sir. I hope so. सिस्टर रोशनी, आज समय बहुत ज्यादा हो गया है. अक्सर हमारा बहुत जल्दी खत्म होता है, पर आज थोड़ा ज्यादा हो गया है. ठीक है, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा. थैंक यू मैम. Yes. Okay, good. Praise God. I was telling Sister Roshni also, like today the time is we have taken a little bit more. Normally we finish it before this. Yeah. Oops. Normally. Because it's normally this is night time here, so everyone mostly in the houses, it's not that lively atmosphere. Half people are sleeping, so all those things. So there for you it's morning, so it's okay there. Yeah. I'm sorry. Okay, we can finish. We can finish. Yeah. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you.
Thank you so much for coming, everyone. It was good Thank to see you. you this week. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबने ज्वाइन किया, Thank सब you. आए। Okay, thank you Thanks for very everyone. important teaching. Yeah, God bless Thank you so you. much, ma'am. Yeah, thank you, sister. Bye. Thank Okay, you. bye. See you next Thursday. Yes. Yeah, please send any question you have, Brother Johnny. Because everyone else has questions too. आप लोगों के जितने प्रश्न हैं आप जरूर ग्रुप में डाल दीजिएगा। Yes, of course. Thank Good. you. I'll see you next week. Yes. Bye bye. Okay. Bye-bye. Okay, bye. Good night. India Good times. night. Good night. Goodbye from my kitty. उनने अपने किटी की तरफ से बिल्ली की तरफ से भी बाय बोला है।